Let's continue with amphibians now. Up to Pisces, everybody has understood everything? ठीक है? Okay. Screen पे आ जाओ सब लोग. So now we move on to the next group, okay, which actually जैसे Pisces के लिए हमने बोला था, that was under superclass Pisces, जिसको commonly बोले थे fishes, okay, and we have seen the distinguishing characters under which there were two classes that we have seen. Now we are talking about the other superclass. Just for information, you have to remember this because classification you have to follow only which is given in your textbook. So this remaining ones, इनको हम बोलते हैं tetrapoda. Okay, the word tetrapoda itself has got a meaning. पोडा मतलब क्या, जैसे आपका अर्लियर आर्थ्रोपोडा जब बताया था मैंने, पोडा का मतलब है फीट, लेग्स ऑफ फीट, ओके, एंड टेट्रा का मतलब है, टेट्रा मीन्स, what is the word tetra indicate? We say mono. Many. No. फोर. टेट्रा का मतलब है फोर. थ्री को ट्राई बोलते हैं. टेट्रा मीन्स फोर को तो क्वाड्रा बोलते हैं ना. क्वाड्रा भी बोलते हैं, टेट्रा क्वाड्रिलेटरल. या क्वाड्रा भी बोलते हैं, टेट्रा भी बोलते हैं. ओके, सो इट इज मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे करके बोलते हैं. ठीक है. सो हियर व्हेन यू से टेट्रापोडा, इट मींस इनके अंदर जितने एनिमल्स आ रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर हैविंग फोर लिम्स. चार लिम्स. द करेक्ट वर्ड इज लिम्स. यहाँ पे हैंड्स एंड लेग्स नहीं बोलेंगे. ओके, because in case of human beings we call the hands as the forelimbs and legs as the hind limbs. So the common word is limbs. Okay, so all the vertebrates having four limbs belong to tetrapoda, under which we have four classes to learn: amphibia, reptilia, aves, and mammalia. Okay, now the first one under this, that is class amphibia. Okay, the meaning of the word amphibia is double life. डबल लाइफ करके मीनिंग है उसका, एम्फीबिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल लाइफ? इट सिंपली मींस दीज एनिमल्स कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर. ये दोनों जगह पे रह सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस करके बोलते हैं. दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर. ओके, दैट्स व्हाई द वर्ड इज डबल लाइफ. So they are found in aquatic as well as terrestrial habitat. Okay, and they have mostly two pairs of limbs. If you remember arthropoda वगैरह दिखा था तो it was 8 pairs, 6 pairs, ऐसे अलग अलग रहते थे. Okay, but here they are modified in such a way that they have 2 pairs of limbs. Okay, when you say amphibia, remember the example of a frog. तो आगे 2 limbs, पीछे 2 limbs. ठीक है. And the body is divided into head and trunk, and in some of them they also have a tail. A proper head with a trunk and tail in some of them. Okay, and when you're talking about amphibians, because they are living in water as well as land, that's why when you touch their body it is slimy and glandular. जैसे एक मेंढक को अगर मैं हाथ में लेता हूं तो वो स्लिप हो जाएगा मेरे हाथ से, because its skin is moist and glandular without any scales. Scales were there in Pisces. So what is the reason why it is moist and glandular? Moist और glandular क्यों रहेगा? Because when it is in the water, it is breathing with the help of gills. So respiration is by gills when it is in the water. Internally, they also have lungs. So lungs use करते हैं when they are on the land. And when they are on the land, when they have to breathe with the lungs, so they breathe directly through the skin. So for that, the skin has to be moist and glandular. Okay. And very important feature in the case of amphibians, abhi till Pisces, all the animals that we saw, they did not have any ears.
Even in the case of amphibians, they don't have a true ear like what we have. But on the sides of their head, they have a small membrane in that portion, जहाँ पे कान होना चाहिए था, which represents the primitive eardrum. उसको हम बोलते हैं tympanum. So that means there is an evolutionary feature developing over here. एक proper ear जैसा structure आने लगा. So this tympanum represents the ear in the form of a thin membrane on the sides of the head. वो इन animals में सबसे पहले मिलता है. And these animals have eyelids. Eyes are having eyelids. इसके पहले तक नहीं था वो. Another unique feature. No exoskeleton because the skin is moist and glandular. No scales, nothing. But internally they have bones as the endoskeleton. Okay, vertebrata में है तो अब bones है. अब यहाँ से सारे animals में bones है, endoskeleton. Okay, bones are always there. Cartilage can also be found in some. Okay, and the heart is 3-chambered. Fishes में it was 2-chambered heart. Okay, amphibians में it's a 3-chambered heart. So there are 2 auricles and 1 ventricle. So that you have to remember. Okay, now sexual dimorphism can be observed. Male and female are separate. In external fertilization, okay, gametes are released in the surrounding region where they fertilize and the zygote is formed. And indirect development can be seen in some of them. जैसे larvae develop होते हैं, they have a tail, but when they turn into an adult, the tail is lost. Eggs are laid. Parental care to some extent can be seen. Okay, and at the end of the alimentary canal, okay, where there used to be an anus. In that region, there is a common chamber called the cloaca. This is where the urinary tract and the reproductive tracts combine and open as one opening. That is where a common chamber called cloaca is present. Okay, so these main points about amphibia you have to remember. Understood all the points? अभी वो सब डाउट ही नहीं है कि सेगमेंटेशन है कि नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, दैट इज ऑल कॉमन टिल एग्री. वी आर टॉकिंग अबाउट हायर एनिमल्स, सो वो तो सब एडवांस फीचर्स है. ओके, सी दिस. इसमें देखो फ्रॉग के साइड में कान की तरफ टिम्पैनम है. ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स नाउ. सी दिस. देयर आर 2 एनिमल्स व्हिच आर वेरी सिमिलर लुकिंग. एक को बोलते हैं टोड, दूसरा है फ्रॉग. A toad is generally less colorful and slightly larger in size as compared to a frog. Frogs can be very small also. And frogs में there are enormous diversity. Colors भी बहुत bright रहते हैं frogs में. Okay, frogs में colors are also very bright. ये देखो bright green color के साथ. Okay, and toad is not that colorful. Then this is salamander. ये वाला. See the color. Okay, this is tree frog. Green color के. Especially when you go to the Konkan region and the Western Ghats of India, you'll find enormous diversity in frogs. There is one example I know, उसको glass frog करके बोलते हैं. उसका skin जो है वो transparent है. You can actually see the internal organs. Western Ghats में discover हुआ था. Okay, so and this one, it looks like a snake, but it is not a snake. ये एक ही ऐसा amphibian है which is limbless. It does not have limbs. इसका नाम है Ichthyophis. It looks like a snake, but it is not a reptile. It is an amphibian. So this is one unique example of an amphibian which looks like a snake, because इसमें amphibians के सारे features है except for the limbs. ठीक है? So toad, frog, salamander, Ichthyophis and tree frog. ये examples याद रख सकते हैं. All types of frog जितने भी है they are under amphibia. And frogs में और एक feature देखो ध्यान से. Frog या फिर toad भी अगर देखते हैं तो इनका feet जो होता है that is called as the webbed feet. Okay, and in case of frogs and toads, the hind limbs are longer and more developed as compared to the forelimbs. Why? Because they jump. Because they jump. Frogs are popular for their jumping, है ना? तो पीछे वाले पैर में ताकत रहता है ऐसे उड़ान मारने के लिए.
Okay, and what is the role of the webbed feet? They help in swimming when they are in water. Yes, when they're in the water, it helps them to swim, and on the land they can jump. And frogs का और एक unique point है, they have very sharp and long tongue and sticky tongue. तो जैसे कोई तालाब है, उसके अंदर पानी में फ्रॉग है, एंड अंदर से वो देख रहा है कि ट्री के ब्रांच के ऊपर कोई छोटा इंसेक्ट है, which the frog wants to catch and eat. Okay, so some frogs are capable of spitting. वो पानी का एक जेट छोड़ेगा, इंसेक्ट टकरा के नीचे गिरेगा, फ्रॉग विल कैच इट. एंड एट द सेम टाइम कुछ फ्रॉग्स ऐसे होते हैं जिनका टंग इतना स्टिकी होता है कि इंसेक्ट के जितना हो सके उतना नजदीक जाएगा, इमीडिएटली द टंग विल बी आउट, कैच द इंसेक्ट, पुट इट इनसाइड. उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो मर गया. ओके, सो दैट इज अनदर यूनिक पॉइंट अबाउट फ्रॉग्स. ठीक है, एनी डाउट इन एम्फीबियंस? सर, या फ्रॉग दीवार पे वॉक कर सकते हैं? हाँ, उनके वेब्ड फीट के नीचे ना एडहेसिव पैड्स होते हैं, दीवार पे कर सकते हैं चिपक मतलब? सकते हैं. होता है ऐसा, डिपेंड्स ऑन द फ्रॉग, यू कैन नॉट से कॉमन फॉर एवरी फ्रॉग. थोड़ा सा उनको ग्रिप मिल जाएगा तो वो चढ़ सकते हैं. ओके okay, so let's move to the next one, that is class Reptilia, the reptiles. Okay, now when you say Reptilia, they are creeping या crawling animals, unique ones. Okay, creeping या crawling animals. ठीक है, so all these animals, इनको देखकर एकदम डरावना जैसा लगेगा. Okay, come on the screen everyone, let's see the expressions, and that's how the interaction will be more enjoyable. Okay, so when you are talking about the reptiles, okay, they are creeping or crawling animals. इसका easiest example, which I guess everybody will agree, one animal which nobody likes to see or look at, and that is lizard. Correct? कैसा लगता है छिपकली देखकर? दीवार पे अगर एक ज्यादा हॉरिबल होता है. yes, you look at it and you feel like you, उसके सामने कॉकरोच देखना पड़ेगा, right? And the worst part is that this lizard, if you try to scare it away, वो अपना ही मजाक उड़ाता, हिल देगा नहीं जगह से. Correct? At least a cockroach or a rat or something enters your house, they get scared and they run away, so you feel better. But a lizard is like हिलेगा नहीं जगह से. Correct? So these are animals which are like that. And anytime when you are talking about reptiles, the other good group that you can talk about are the snakes. And again, there are different species of snakes. And obviously, all of them, all these reptiles, when you say, they are carnivorous animals. Okay, they are all carnivorous. They all have scales on the body. Okay, and they are all crawling animals. That's a typical group. Okay, so when you talk about reptiles, they are mostly terrestrial. Okay, और अगर कभी पानी में मिलते भी है तो वो ज्यादा टाइम पानी में नहीं स्पेंड करते, unlike the amphibians. So they are more into the land now. ठीक है, because उनके crawling habit है वो. Okay, very important word over here, poikilothermic. What do you mean by that? There are two words actually, poikilothermic and homeothermic. I think cold-blooded and warm-blooded. Very good. Poikilothermic का मतलब है cold-blooded animals. Now, what do you mean by cold-blooded? ठंडा खून? जैसे बाहर का टेम्परेचर मीन्स कम होता है तो उनका भी कम होता है. That means simply cold-blooded or poikilothermic animals means they are able to manipulate their body temperature according to the environmental temperature. उसका मतलब है cold-blooded. Okay, poikilothermic. And they have two pairs of limbs whenever present. Otherwise, there can be limbless ones also, like the snakes. Okay, and very unique phenomenon which you can see in the case of snakes and even sometimes in lizards. ये देखो, snake जैसे जैसे grow होगा
वो अपना स्किन को शेड करते हैं. यू कैन एक्चुअली सी द स्केल्स. कई बार अगर हम लोग ऐसे टाइम पे फॉरेस्ट में जाते हैं ना, तो कोई स्नेक रहेगा जिसने अपना स्किन शेड कर चुका होगा. So you will find entire replica of the only the skin. Okay, like many years back मैं students के साथ excursion गया था. It was at Mahim Nature Park. महाराष्ट्र नेचर पार्क भी बोलते हैं. It is in Bombay. तो वहाँ अंदर फॉरेस्ट में जब हम चल रहे थे तो I came across this scale of a snake, skin of a snake, shedding करते हैं. Okay, so that's a very unique phenomenon. उसको molting करके बोलते हैं. ठीक है, molting, 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 shedding of scales in snakes. And इनका जो exoskeleton होता है, like in amphibians we saw that the skin is, they don't have any exoskeleton but the skin is moist and glandular. So here in the case of reptiles, the exoskeleton is dry and cornified. You take a snake and you move your hand over it, so you will understand. Okay, एकदम सूखा सूखा सा और cornified रहता है, कड़क. There can be epidermal scales or scutes also present. You take a crocodile and you move your hand over it, कैसा लगेगा? Have you ever taken a lizard in your hand? Yes, स्नेहा, कभी लिया लिजर्ड को हाथ Yes. में? लिया है? बचपन में. अच्छा, बचपन में. वेरी गुड. दैट टाइम यू आर नॉट अवेयर ना कि दे बिलोंग टू रेप्टिलिया. तो No. उसका स्किन कैसा लगा था रेप्टाइल्स का, लिजर्ड का? मतलब ऐसा स्मूथ स्मूथ टाइप था और बीच बीच में रफ भी था. यस, तो तभी बिकॉज कैसे एपिडर्मल स्केल्स होते हैं एंड कॉर्निफाइड स्किन होते हैं. यू कैन इमेजिन क्रोकोडाइल स्किन, करेक्ट? एंड स्नेक्स का भी स्किन देखो कैसा रहता है, करेक्ट? So that is because of hard and exoskeleton. Okay, crocodile का स्किन इसलिए लेदर के लिए भी यूज करते हैं. ओके, एंड बोनी एंडोस्केलेटन, ये तो अभी कॉमन पॉइंट हो गया. So here also they have three chambered heart just like the amphibians, but here the three chambered heart consists of two auricles and one ventricle, but exception है crocodile का, where it has got a 3.5 chambered heart, because उसमें जो ventricle है वो आधा डिवाइडेड है. So two full auricles and half divided ventricle. So we call it as a 3.5 chambered, exception in crocodile. Otherwise, all the other reptiles have 3 chambered heart. Okay, and they are unisexual. Male and females are separate. Oviparous है, but इसमें एक example है viper snake. This one. Okay, this is supposed to be viviparous. Again, the same thing I'll tell you. It is not proper viviparous. Okay, it lays the eggs, but only the young ones come out directly. Okay, fertilization is internal. अब यहाँ से reptiles, aves and mammals में fertilization is internal. Okay, the male will deposit the gametes inside the body of the female where the fertilization will take place. And there are no stages like larva, pupa वगैरह सब ऐसा कोई stages नहीं है. So there is direct development. Okay, young ones are hatched and the young ones resemble the parents and they grow into adults. ठीक है? Understood these points, everyone? Okay. सर Yeah, बोलो. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो उनका भी बढ़ जाता है क्या? उनका ठंडा होता है. Like they adjust themselves to surroundings, but obviously they have a certain range. मतलब ठंडा हो गया तो गर्म होता है उनका Yes, टेम्परेचर. because अगर बाहर गर्म हो गया उनका भी गर्म हो गया तो it is difficult for them ना. हाँ, हम लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं? We are not cold blooded, but अगर बाहर बहुत गर्मी है तो हम लोग एसी चलाते थे ना. बाहर गर्मी है तो हम लोग रूम हीटर लगाते हैं क्या? नहीं, राइट? तो एनिमल्स को भी वही रिक्वायरमेंट है. तो हियर दे हैव एडेप्टेशन. या बोलो. स्नेक वैसे स्किन क्यों छोड़ते हैं? बिकॉज व्हेन द स्नेक्स ग्रो इन साइज ना, तो उनका जो पहले का स्किन होता है वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं रहता. तो दैट्स द रीजन दे वो अंदर से नया स्किन प्रोड्यूस करते हैं तो पुराना वाला छोड़ देते हैं. बिकॉज इट बिकम्स अनफिट फॉर देम. हम लोग भी जैसे जैसे बढ़ते हैं तो अपने कपड़े छोटे होते जाते हैं तो नए कपड़े खरीदते हैं. तो स्नेक्स को शॉपिंग तो कर नहीं सकते तो दे शेड देयर स्किन्स. दैट इज अ फेनोमेनन. ओके, let's see the examples. Very unique looking animals in reptiles.
turtles and tortoises come under reptiles. Okay, and between a turtle and tortoise, tortoises can go very large also sometimes. एकदम giant हो सकते हैं. In fact, the tortoise is one of the animals that has got a very long lifespan. Giant tortoises British के टाइम पे देखा गया था, they can live up to 200-250 years maximum reported. 250 years का एक tortoise था. Okay, and turtles are more of like difference क्या है दोनों में? They have flippers and these have feet. Okay, and turtles are more colorful. Tortoises are less colorful. These are more big in size. Okay, this is the sorry, tree lizard, chameleon. Unique point you know about chameleon? क्या यूनिकनेस है chameleon का? गिरगिट बोलते हैं ना इसको. Yes, Diksha. What is the uniqueness about chameleon?